Namaskar and welcome to Sansad Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights, where we bring you details of the key developments in both houses of parliament. Let's begin with the headlines first. Finance Minister Nirmala Sitharaman replies to discussion on union budget in Lok Sabha, calls Jan Dhan Yojana the first step towards financial inclusion and Amrit Kal in India. General discussion on union budget in both houses. BJP members praise Prime Minister's vision on promoting sustainable development. Opposition suggestions range from hike in MP-led funds, women's reservation bill and ways to boost green energy. Welfare scheme for journalists who died in the pandemic, a central assistance for tourism in Bihar, completion of airstrips in Arunachal Pradesh among some questions raised in both houses. Let's now take a look in detail at all these news items. Finance Minister Nirmala Sitharaman replied to the discussion on the union budget in Lok Sabha. Hitting out at the Congress party, the Finance Minister said that UPA's term was India's Andhakal with double-digit inflation, poor FDI management and corruption. Sir, there certainly was an Andhakal in this country. But that Andhakal was thanks entirely due to the Congress. And I list out a few things why. No one of us can disagree that Andhakal that was. Start with the fact that in 1991, we had foreign exchange reserves only for 2 weeks. उससे पहले emergency का काल भी हम सब जानते हैं. So Andhakal that was. Andhakal again in 1991. Double-digit inflation. During UPA 1 and 2, particularly in 2, was Andhakal indeed. And that's the Andhakal probably he's referring to. Third, coal scam. Every day there was headlines in the papers about corruption, 2G scam, Antariksh Deva scam, middlemen everywhere. Country didn't know what's happening. Every morning it was dreadful to see the paper with yet another scam. That was Andhakal, sir. She also said that the current government managed the financial crisis in 2021 due to COVID-19 pandemic in a much better way than the UPA's handling of the global financial crisis of 2008. Sir, despite significant supply side disruptions, India's CPI inflation, I'm picking that up for a minute, was 6.2% in 2020-21 as compared to 9.1% in 2008-9. Look at the intensity and the scope and the depths to which Indian economy had to contract. We lost 9.57 lakh crores worth in this global financial crisis, whereas the loss earlier, which is the global financial crisis, was 2.12 lakhs crore. But the CPI inflation now, because I'm purposely bringing this, because CPI inflation is the index with which we measure how prices affect common man. It's the consumer price index. Now that contracted only 6.2 now, whereas for a smaller contraction, which was not even a negative contraction in the global financial crisis period, the inflation, the CPI was 9.1%. What does it mean? That today, in spite of this intense crisis, in spite of the reduction in the GDP to the extent of 9.57 lakh crores, the CPI is well contained and it is only 6.2%, showing that we have managed the economy much better now than it's easy to say now, than a smaller crisis of that time when the contraction was only 2.12 lakh. The Finance Minister asserted that the Indian economy grew faster than the US and the European economies after being hit by the COVID-19 pandemic. US में growth जब -3.4 हुआ, हमारा -7.3 रहा, हम 9, 7.1 में growth कर रहे हैं.
सर यूरो एरिया, पूरे यूरो एरिया का 6.4 माइनस 5.2 इस साल, 3.9 आने वाले साल और 2.5 अगले साल। मैं इस कंपैरिजन को क्यों दिखा रही हूं? डेवलप्ड कंट्री हो, इमर्जिंग इकोनॉमी हो, हमारे जैसे एक ही मतलब साइज में छोटा इकोनॉमी नहीं बड़ा इकोनॉमी हो, इन सब का ग्रोथ और इन सब का पैंडेमिक के समय गिरावट, ये सब को कंपेयर करते हुए गिरावट हमारे बहुत ज्यादा हुआ, मगर रिकवरी भी उतना ही पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस साल, आने वाले साल, अगले साल भी बाकी सबका रिकवरी इतने फेस में नहीं है। The Finance Minister also responded to concerns raised by the members over capital expenditure, Manrega and employment. For every public taxpayers' money that we spend on capital expenditure, building assets, building public infrastructure, this year itself you will have 2.45 as multiplier, and the next year you will get 3.14 paisa, 3 rupee 14 paisa. Therefore, we thought public taxpayers' money being spent in creating assets gets us better returns, better multiplier effect, and therefore we chose to spend on capital, in infrastructure building. Sir, reduction of Manrega. So Manrega is a demand-driven program. As and when there is demand, through the supplementary demand for grants, we give the additional required amounts, but we have not reduced from the BE compared to BE. The amount has remained same, and it is this government which, having given in the BE 64,000 crores in 2020-21, raised it to 1,11,000 crores for Manrega. So, when the demand comes, we give them the monies which is required for keeping the rural employment guarantee scheme. I just want to quote BE 21-22, 73,000 crores. RE increased to 98,000 crores, and BE again 73,000 crores. There is no reduction. The lower house on Thursday resumed the general discussion on Union Budget 2022-23. More than 80 members cutting across party lines participated in the general discussion on the Union Budget in Lok Sabha. The House spent 13 hours and 50 minutes on the discussion. Participating in the debate on the budget in Lok Sabha, BJP MP Rajiv Pratap praised Prime Minister Modi's vision for promoting sustainable development. देश में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण होगा तो उसके ऊपर एक पुल होगा, इतना बड़ा बड़ा पुल होगा। और उसका उदाहरण भारत में देहरादून से हरिद्वार के बीच में अगर आप यात्रा करेंगे तो नीचे नदी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बड़ा पुल है। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों है, तो कहा कि राजा जी नेशनल पार्क में दोनों तरफ जंगलों में जाने के लिए हाथियों का रास्ता छोड़ा गया है। देश की सरकार सड़क बनाते समय हाथियों के भी रास्ता का मार्ग छोड़ती है। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हर बार हम लोगों का डेट बढ़ता जा रहा था रोड बनाने में, और 2014 से लेकर के अभी तक 14 गुना हमारा डेट हो गया राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण में। लेकिन हमारे बोरिंग इस बार सरकार ने क्या किया, बजटरी सपोर्ट 65,000 करोड़ का दिया और 65,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, पूरा 100% देश की सरकार। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो उद्घोषणा की है, वही भारत को ये इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करने के लिए तैयार करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है वह मजबूती के साथ पूरा होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखा है। आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो सुनते आ रहे हैं, ये रोड मैप क्या है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की? आपके कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में 25% हम जीडीपी के हिस्सा बनाएंगे। ये 25% जीडीपी के मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा बनाने के लिए क्या का रोड मैप है, किसी को पता नहीं। टमाटो हमारे जमाने में 18 रुपया किलो था, आज 35 रुपया किलो। कितना इजाफा? 84%। कैप्सिकम हमारी जमाने में 33 रुपया 1 किलो, आज 72 रुपया 1 किलो, इजाफा 118%। आप क्या कहोगे
एक के बाद मस्टर्ड ऑयल हमारी जमाने में 90 रुपया, आज हो गया 185 रुपया पर लीटर, मतलब 105% इजाफा। सही मायने में देश के लोगों को अमृत देने का कार्य हमारी वित्त मंत्री मैम निर्मला सीतारमण जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 60-70 साल की आयु में लोग बीमार होने लगे हैं और वहाँ पहली बार देश में कल्पना हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर की। ऑर्गेनिक खेती से कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पहले की किसी सरकार ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाना है। मैम, The budget provides a blueprint for steering the economy towards a sustained high growth trajectory and aims to lay a strong foundation to steer the Indian economy towards Amrit Kal for the next 25 years, from India at 75 to India at 100. As soon as the lower house assembled for the day, various members raised issues of public importance during question hour. Shiv Sena MP Rahul Ramesh Shivale asked if the Ministry of New and Renewable Energy was planning to fund and finalize technology for waste-to-energy programs. BJP MP Tapir Gao's query was on the completion of 3 airstrips under the Udan scheme in Arunachal Pradesh. Questions ranged from electricity generation from waste to the development of smart cities as well. There are reports that MSMEs are owed almost to the tune of 5 lakh crores. These are the numbers that was swirling around for the last 2 years, and it has been mentioned by none other than Nitin Gadkari ji. So, in the last 2 years, how much of these 5 lakh crores has been cleared to these MSMEs by PSUs or government agencies which owe this amount to them? पिछले 2 साल में 2,80,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए। टेक्नोलॉजी फाइनलाइज न होने की वजह से और रिटर्न न मिलने की वजह से पीपीपी मॉडल फेल हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वेस्ट टू एनर्जी को फंडिंग करेंगे 70% कैपिटल वर्क्स को या ओएनएम को, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को, आज नमामि गंगे का भी जो भी जहाँ वहाँ पे भी एसटीपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे ओएनएम न होने की वजह से वहाँ पे एसटीपी के प्रोजेक्ट फेल, वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट फेल हुए। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि वेस्ट टू एनर्जी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी क्या और टेक्नोलॉजी फाइनलाइज करेगी? Mr. Speaker, sir, when we were funding it, we did not insist on a PPP mode. The developers could have developers set up the waste to energy plants by themselves. And so far as the efficiency is concerned, we took care of that. We provided that whatever electricity is generated from the waste to energy plants will be compulsorily purchased by the distribution company, whatever the cost. Majority of the projects are not even completed the work order stage. The deadline of the completion of the project under Smart City Mission is June 2023. The slow progress in implementation of projects in Thiruvananthapuram should be reviewed. Sir, my question, whether the government will conduct a review meeting and take necessary measures for faster implementation of the project in Thiruvananthapuram. Work order stage is at 73%, work completed is 21%, but I have no doubt that this and the others which have to be completed by March 2023, we will review them both here and ensure that they are on the timely completion. इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नया एयर स्ट्रिप बनाने के लिए दिरांग, दापोरिजो, आनिनी में मिनिस्ट्रियल एक्सपर्ट को भेजा है। तो प्यूसार में उड़ान सर्विस से जुड़ने के लिए ये 3 जगह में एयर स्ट्रिप मंत्री जी कब तक बनवाएंगे? इस योजना में अरुणाचल के लिए भी हमने बहुत प्राथमिकता दी है। 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डीपीआर उनकी हो चुकी है और रिपोर्ट भी हमने राज्य को भेज दिया है। हम राज्य से इंतजार कर रहे हैं, जब जवाब आएगा तब तीव्र गति से हम लोग क्रियान्वयन जरूर करेंगे। Let's take a short break here, but on the other side, we'll bring you details of the developments in Rajya Sabha as well. Stay tuned.
Welcome back. Let's now take a look at what transpired in the Rajya Sabha today. Rajya Sabha resumed the general discussion on the union budget on Thursday. Finance Minister Nirmala Sitharaman will reply to this discussion on Friday. BJP MP Zafar Islam during this discussion said that UPA government did not fulfill its promises when they were in power. Congress MP Chaya Verma asked the government to bring a women's reservation bill, and BJD MP Sujit Kumar praised the government's announcements to boost green energy. Let's take a look. UPA stands for Underperforming Alliance. It is very clearly because whatever they had mentioned in 2004 and 2009 in their budget, in their manifesto, and subsequent budget scheme and presentation, I want to remind them. They mentioned about providing electricity to everyone. Did they? It is us. It is under the leadership of the Honorable Prime Minister. We are providing electricity to every single household. सर उन्होंने वादा किया था सर कि हम जल पानी पहुंचाएंगे, घर तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा था कि हम टेररिज्म खत्म करेंगे, टेररिज्म हम खत्म कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे सर कि इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन को हम जो है रिजर्वेशन देंगे सर, वो भी काम हमने किया सर। उन्होंने जितने भी काम बोले थे सर, उस काम को पूरा करने का काम हम किया। आपकी बहुमत है तो आप विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाइए। हमारी सोनिया गांधी कहती हैं कि हम समर्थन करेंगे, आप उस बिल को लाइए, हमारी पार्टी समर्थन करेगी और तब सही मायने में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सार्थक होगा, वरना केवल ये नारा ही रह जाएगा। Sir, I will also commend the Honourable Minister for the steps taken by the government to boost green energy and also coming out with policies such as battery swapping policies for EV and sovereign green bonds, which will help mobilize resources for green infrastructure. However, my Chief Minister has also flagged several concerns, particularly the reduced allocation for various social sector schemes in the areas of agriculture, rural development, health, women and child development. हमारे लिए तो अर्थशास्त्र सर गरीब और निम्न आय वर्ग की थाली है। मैं तो उसकी साइज देखता हूं सर। मैं बजट में पोर्ट वाले को क्या मिला, एयरपोर्ट वाले को क्या मिला, उससे मैं चिंतित नहीं हूं। दे दीजिए ना सब कुछ, लेकिन गरीब की थाली महफूज रखिए। गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मैं खास तौर पे कहूं एजुकेशन और हेल्थ में जो आपका एलोकेशन है, अलॉटमेंट है, उसमें फिर से एक बार वही रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं। There is no vision at all. Is that there should be constitution of a special cadre for municipal services, just like we have the Indian Administrative Services, Indian Foreign Services, Indian Revenue Services. Similarly, a separate cadre for municipal services is absolutely required, considering the fact that municipal corporations now require urban planners, economists, management personnel, ecologists, geologists, experts on water and environment, and all these are missing at the moment. Sir, the budget not touched the millions of Indians who are adversely affected COVID. As many of my colleagues said, the haves and have-nots, the gap has widened. The haves have become richer, the have-nots have become more poorer, sir. There is no real freedom without economic freedom. And the way in which nation's income and expenditure is allocated is increasing in the number of poor, especially among the farmers. कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मसाला उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उत्तम कोटि के मखान बिहार के दरभंगा जिले में होता है। इस व्यवसाय को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। मुजफ्फरपुर की शाही लीची उस संबंधित उत्तर बिहार में लगना चाहिए उद्योग के रूप में। प्रत्येक जिले में फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और इससे रोजगार मिलेगा। So year on year, the government has reduced the allocation for Manrega. This year, this reduction of 26%. From last year, revised estimate of 98,000 crores has been come to 75,000 crores. At this rate, this the largest employment program in the world will come to a standstill.
And it's any indication next budget will be the last nail in the coffin of Manrega, sir. And the budget speech does not even mention about Manrega. कृषि स्टार्टअप के लिए नाबार्ड अब फंडिंग करेगा, फल सब्जी उगाने वाले किसानों को पैकेज मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को किस प्रकार से आगे किया जा सकता है। पहले आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खुलवा के फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जैम के द्वारा किसानों को सशक्त किया। Government's response was sought on various issues during question hour in the upper house. Questions ranged from a welfare-related scheme for journalists, for those who lost their lives during the pandemic, central assistance for tourism development in Bihar, and funds for tiger conservation in Madhya Pradesh. मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पोचिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र की सरकार क्या प्रयास कर रही ताकि कम से कम पोचिंग से मरने वाली टाइगर्स की मौत को रोका जा सके। अभी पिछले ही महीने जो हमारी एनटीसीए की सालाना जो बैठक होती है वह बैठक भी हमारी एनटीसीए की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है और उसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स एरिया हैं वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको हमने एक स्पेशल डायरेक्शन दिया है कि विशेष रूप से कोचिंग को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के जो समस्याएं आती हैं उसके लिए अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भेजें। हम उस रिपोर्ट पे काम भी कर रहे हैं और आने वाले समय पे उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वो ऐसी कोई योजना लाएंगे जो कि बहुत बड़े स्तर पे बिहार को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोई योजना रखते हैं। माननीय उपसभापति जी, बिहार को पर्याप्त मात्रा में स्वदेश दर्शन हो, प्रसाद हो, ये जितने भी हमारे परिपथ हैं उसमें चाहे बौद्ध परिपथ हो, गांधी जी के नाम पर एक परिपथ है, एक बड़ी पुरानी मांग रही है जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिसको प्रसाद योजना में ले लिया गया है, और दूसरा है भितरवा चंदरिया तकोलिया जो गांधी परिपथ था। ये बड़ी डिमांड रही है। लगातार बौद्ध धर्मावलंबियों का पर्यटक के रूप में पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर आगमन है। अभी बीच में कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद मुझे लगता है कि इस पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। वर्तमान में देश में पत्रकार कल्याण योजना किन किन राज्यों में सुचारू रूप से कार्य कर रही है और योजना के तहत कोविड महामारी के समय जान गंवाने वाले पत्रकारों की संख्या क्या है? So we are very much concerned about the journalists' welfare. That's why, sir, in the Corona period and particularly COVID-19, during the COVID-19 time, we conducted a special drive for the journalists, those who lost their life. We want to support the family. We received 123 journalists' proposal. All 123 journalist proposal are accepted. We released 6.15 crore amount to the concerned families, sir. Several issues of public importance were also raised during the zero hour in Rajya Sabha. Let's take a look. I would like to draw your attention to the urgent need of expediting vaccine coverage in tribal-dominated areas in the wake of COVID-19 pandemic. Sir, I earnestly appeal to the Honorable Minister of Health and Family Welfare to take into account these existing discrepancies, since tribal communities are socio-economically marginalized and lack of access to vaccine can disproportionately expose them. Please conclude. It would disproportionately expose them to the pandemic. Thank you. सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विशेषकर रीवा जिला काफी पिछड़ा हुआ है, जिसमें त्योंथर तहसील के अंतर्गत बाण सागर जल बहाव योजना लंबे समय से अधूरी है। जल बहाव योजना के तहत लोनी बांध सूती में पानी भरने तथा लोनी बांध के गहरीकरण करने से 20 गांव की सिंचाई होगी। वहीं पास के खामरा बांध का गहरीकरण कराया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि विशेष प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे। Sir, every single year, thousands of lands, mango orchards, farming fields and houses, especially of poor people, are engulfed by the river.
And these areas come under the direct purview of Farakka Barrage, which is under the Ministry of Water Resources, Government of India. But unfortunately, the Farakka Barrage has drastically failed to prevent the erosions or take any actions to conduct anti-erosion works even after repeated reminders. If this issue is not looked into, many lives, lands and properties will be lost forever. Thank you. Well, that's all we have in this edition of House Highlight. We'll come back again tomorrow with details of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Till then, keep watching Sansad Television. Thank you.